स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः अग्निर्षि पवमान पांचजन्यः पुरोहित तमेमहि महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवस्वः पवस्वपास्मै वर्चः सुवीर्यं दद्रैमय पोष्यां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवस्वः प्रजापतिरत्वरेदानन्यो विश्वाजातानि परिताववो यत्कामास्ते धूमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरहिना स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवश्च हेरोयाशिशिष्टो यजष्टो तमशुषाणु विश्वद्वांसि प्रमोद्यस्मत् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्नमम ओम सत्तन्नो अग्निभवो भवति निदिष्टा शौषशो विष्ठो अवयक्षाणो वरुणरम्ररानुम्रीकं सुववो न एधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्नमम ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ओम तत्त्वयामि एनमानो हेमः ओजुरुसञ्जमानः आयुः प्रमोषिः स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ओम ये तेषतं वरुणहे सहस्रं यजया पाशा विततमहान्तः ते बीर्नो अद्य सवितोट विष्णो विश्वे मुच्चन्तु मरुतस्वर्गः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विष्णुभ्यो देवेभ्यो मरुतस्वर्गेभ्य इदन्नमम ओम अयश्चाग्निश्शन विषाति सत्तं मिदं मयासि अयानु महाशनु देहि वेशज्जग्वं स्वाहा इदमग्नये अयसे इदन्नमम ओम उदुत्तमं वरुणपास्वमदं भिमद्धयं शधाय अदामादित्य व्रते तमनागस्वरितये श्याम स्वाहा इदं अदितये च इदन्नमम ओम भवतनः समनसो सचेतसा वरेपसो मायग्गं हिग्गं शिष्टं मायज्जवधिं जातवेदसो शिवो भवमध्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमम ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योतिसूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्यः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सविता सजुरात्रेण नवत्याजुषाणः सूर्यो वेत्तु स्वाहा ओम भुरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ओम भूर्वावयापानाय स्वाहा इदं वायव्यापानाय इदन्नमम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवस्वरदिवादित्येभ्यः प्राणपाणेभ्यः स्वाहा इदमग्निवादित्येभ्यः प्राणपाणेभ्यः इदन्नमम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पीतरश्युपासते तयामा मध्यमेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रन्त आसुव स्वाहा ओम अग्नेनया सुपठाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भविष्ठान्ति नमौतिं विधेम स्वाहा। Eh bien, dans nos Veds, il y a un mantra spécial pour ça, en malade sur l'anniversaire. On appelle ça Ayush Suktam. Ayu veut dire la vie, longue vie. Et nous pouvons réciter ça, un mantra qui sortit dans Vedas là, et nous pouvons mettre ça à route. Oh
इन्द्राय त्वं तवेश भक्त्यादक श्रियाणि इन्द्रात्रपस्तभे उतच्च श्रियाणि इन्द्राय पचुश्च श्रियाणि इन्द्राय आयुष्यतान श्रियाणि स्वाहा ॐ तेजोसि तथा प्रचच्चामि देव अस्तोमिकं तश्च अस्तोमिहे तश्चं विश्वत प्रथम तेजः संवृतामः स्वाहा ॐ ओजोसि तत्प्रचप्य मे उषम् अस्तोमा मुखम् अष्टमे अस्तुमे अष्टमावृतं प्रजात उचमे प्रजानिः महा स्वाहा ॐ पयोसि तथा प्रयच्छामि प्रजस्त अस्तु मे मुखं प्रजश्च चित्रो अस्तु प्रभाषं विष्टमतम् अस्या समाग्रिमः स्वाहा ॐ आयुरसे तत्र पच मे आयुष्यमस्तु मे मिखम् आयुश्चरिष्चः अस्तु आयुष्मान् विवत्तः प्रदत्त आयुष्यः समन्वृगामः स्वाहा ॐ इमम् अग्न आयुष्यः पश्चाकृतं प्रयोश्चमृतो वरुणा सोमा रजं मातवः अस्मादितः सर्वयच्छः विष्टमयस्तमायत आयोयसे विश्वरोवसे सर्वारोवसे सर्वम् अयोरसे यतो वत्या मनो यः यत्र किमन्ते तस्तत्तं तवारुतम् अभीष्टं समुद्र इव समुद्रं सोमा इवष्टव अग्निर्इषा मत्तं सूर्य इव ज्योतिरुष्यः स्वाहा ॐ अपं ध्रुवं यः तम् अहम् अस्मा आयुष्यमान् यः तेजस्तः ब्रह्मः ग्रहाणिः स्वाहा ॐ अपं या अरोर्मरसा तम् अमा अश्य आयुष्य ओजश्च वीरः गृहयां स्वाहा ॐ अपं या मध्यतो तमं यस्य प्रजां यः गृहाणि स्वाहा ॐ अपं यो यज्ञरसः तम् अयम् अस्मा अमुष्टदः आयुष्ट दीर्घा गृहाणि स्वाहा ॐ अग्निरमस्तु या वनस्पते आयुष्यमान् तेन तेजस्तः युष्मनां करोमि सोम आयुष्मताम् अभिष्ट आयो देव अतश्च करोमि यस्त आयुष्य दक्षिण आयुष्ट तेन त्वरित युष्मतां करोमि ब्रह्म आयुष्ट तं ब्रह्म आयुष्ट तेन आयुष्ट एतश्च करोमि देव आयुष्मान् तेजश्च देवायुष्ट ऋतश्च करोमि स्वाहा गायत्री मंत्र गुरु मंत्र ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा महामृत्युंजय मंत्र ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमृक्ष्यमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमृक्ष्यमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमृक्ष्यमामृतात्. Eh bien, nous avons pour Nahuti, un mantra spécial, nous pouvons lire et nous pouvons mettre Nahuti. Om Samaste Agni Vratascha Jivascha Retascha Priyani Saptahotre Jayante Rutascha Paraha Swaha Om Purnahuti Muhurta Sumuhurta Jopade Sarvam Purnahuti Sarva Adam Imame Purnahuti Pratishtita Swaha Om Tajascha Rotascha Vratascha Jarija Itascha hota itascha yashmin ajjena jabad tejo ashtam tejo varsaratam tejascha devavardam kamayah swaha. Om continue a vida ali, ne vidyamatik. Om Shamcha me Yashcha me Priyamcha me Kamascha me Shomascha me Bhadramcha me Shriyascha me Yashcha me Bhagavatcha me Dravinamcha me Kshemascha de Dhruvitamcha me Vishtacha me Yachamcha me Vichcha me Chitramcha me Surcha me Prasuscha me Siramcha me Ruttamcha me Yakshamcha me Namayascha me Jivacha me Dirghayutvam me Mitram me Bhayam me Sugunam me Shamayam me Shosharat me. Eh bien, nous demandons tout pour débuter. Nous pouvons le faire pour nous. S'il vous plaît. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnadarve Parapata Supurna Purnapata Vasneva Vigrihena Ishamutlatam Satatratu Swaha. Alors à 3 fois, nous pouvons tous nous samagri avec nos nez. Om Sarvam Vai Purnagum Swaha. Om Sarvam Vai Purnagum Swaha. Om Sarvam Vai Purnagum Swaha. Eh bien, nous vous demandons tout manière jaman, plonge les doigts dans sa main là, chauffe-les quand nous hawan kun. Nous avons un mantra spécial qui nous va lire. Plonge les doigts dans sa main là, frotte la main, chauffe-les quand nous hawan kun. Om Tejo se Tejo Mahidehi Om Viryam Mahidehi Om Balam se Balam Mahidehi Om Ojo se Ojo Mahidehi Om Manyura se Manyo Mahidehi Om Saho se Saho Mahidehi Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Meerandariki na హృదయపూర్వక నమస్కారం. కూర్చోండి శాంతి.
स्वधा त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वमेव शक्तारः स्वरात्मिका वेदमाता त्वं सदा स्वाहा त्वं सदा त्वमेव शक्तारः स्वरात्मिका वेदमाता त्वं सदा त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं अक्षरे निधे सुधा त्वं अक्षरे निधे विधा मात्रात्मिका माता त्वं स्वाहा त्वं स्वधा स्वाहा सर्ववशे गायत्री वेदधात्री सर्वे सर्ववशे गायत्री वेदधात्री ॐ वेदाय नमः ॐ वेदाय नमः त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं संध्या त्वं सावित्री त्वं संध्या त्वं सावित्री त्वं सरस्वती देवी माता त्वं स्वाहा त्वं सदा स्वाहा त्वं सदा त्वमेव शक्तारः स्वरात्मिका वेदमाता त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वमेव शक्तारः स्वरात्मिका वेदमाता त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं स्वाहा त्वं सदा
नारायण ओम नारायण नारायण ओम नारायण ओम नमो नारायणाय नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायणाय नारायणाय ओम नमो नारायणाय नारायणाय नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नारायण नारायण
तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है,
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ఓ జులైన స్వామి గారు ఇక్కడ వచ్చేసిన అతిథులందరికీ భక్తులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు మరియు సుస్వాగతం. మీ ఆశ్రమంలో పరమేశ్వరి ఆనంద నిలయ ఆశ్రమంలో. Eh bien, tout d'abord, nous faisons namaskar pour le Swami Garu et tout le monde dévot, tout le famille qui est présent. Nous disons tout beaucoup pour namaskar, swagatam. Et mon la gauche, je pensais assez bon, c'est-à-dire, je pensais que j'arrive jusqu'à côté, malgré qu'il nous micro, il y a un problème technique. Alors, aujourd'hui, c'est un grand privilège, c'est un grand honneur parmi nous, le sa Ammala, qui fait célébrer 100 ans l'anniversaire, comment nous dire, century man, century woman, vraiment vraiment extraordinaire. Alors, nous pas vous prendre plus sur le temps, nous vous demandons nous Swami Garu et nous Amma Garu, ou viennent par devant, nous n'approchons pas mal là, nous allons offrir nous Amma Garu. Om Swastena Indro Vrudashravaha Swastena Pusha Vishwavedaha Swastena Staraksho Arishtanemihi Swasteno Bruhaspatir Dadato Om Paya Pradeviyam Paya Oshadisho Payo Devyantariksham Payodaha Paya Swatehi Padisaha Santo Mavyam Om Vishnu Varatamase Vishnu Krishna Krishnava Vishnu Surya se Vishnu Dhruvo se Vaishnavama se Viveshnatvam Om Agnir Devata Vato Devata Suryo Devata Chandrama Devata Vasavo Devata Rudro Devata Aditya Devata Maruto Devata Vishwe Deva Devata Bruhaspatir Devate Devata Varuno Devata Om Shatamanam Bhavati Shatayoho Ayushavendrive Purushave Pratitishtate Om Saubhagyamastum Shubham Bhavado Om Saubhagyamastum Shubham Bhavado Om Saubhagyamastum Shubham Bhavado Om Swastehe 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 Shatamanam Bhavati Shadayoho Ayushavendrive Purushave Pratitishtate Om Shanti Shanti Shanti. Voilà, nous remercions nos Swami Garu et nos Guru Mata qui aujourd'hui fait l'honneur au ashramam de nos Amma qui finissent là pour célébrer son 100e anniversaire. Et qu'est-ce qu'on peut faire là? Peut faire là d'après nos dharma. Nous dharma pas dire mettre gâteau, après pique la bougie, après allume la bougie là, après qu'est-ce fait? Souffler teint la bougie là. Quand vous teint la bougie, vous teint Lakshmi Devi. Ah Lakshmi qui vient dans la vie. Après qui tout du monde dit, to you, mais ou to you même tout ça dharma là aussi. Alors nous disons félicitations pour nous Shriman Rajan Garu, pour nous Shriman Narayan Garu, pour la famille qui organise ça. Et parmi nous, nous avons oui, nous avons toute la famille qui finit collaborer. Nous avons la famille Mouslaya, etc. Nous avons beaucoup, tout le monde proche. Et parmi nous, nous avons l'honneur, nous avons nos Shriman Simadri Latayagaru et de MPMS. Et nous avons nos Chamagaru aussi qui est parmi nous. Et nous sommes bien contents. Et ça fait nous vraiment l'honneur. Alors, nous vous demandons nos Shriman Simadri Latayagaru pour offrir sa push pomme là pour nous Amma Garu. Après, la lui passe ce message. धन्यवाद. Et sans oublier qu'il nous y a demandé
installer, il peut dire un défi secret. Et en même temps, il peut dire qu'il pas besoin de presser, puis il prépare Mahaprasadam pour tout le monde. Et tout le monde, avant nous aller nous prendre Mahaprasad. Voilà, merci. Et dans l'équipe de Ashrama Mistri Mandali, comment nous dit Nari Shakti, alors tout ça, Mistri Mandali, qui a offert ça, Sanmanam là pour nous, Ammagar. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेनाग्रथितां पुरातनमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो भोक्ता गोपालनन्दनः पार्थवत्ससुधिर्भोक्ता भोगां गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्माद्रोण तथा जयत्कदजल गन्धारनीलोत्पल शल्याग्रावती कृपेण वहनीं कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरं धूर्योधनवर्तिनी सोत्तीर्णा खलुपाण्डवै रणनरीं कैवर्तककेशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीताटगन्धोत्कटं नानाज्ञानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितां लोके सज्जन सत्पदैरहरः पेपीयमानं मुरा ॐ शान्ति 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 सर्वत्र नमस्कारं मन स्वामी सत्यकमानंद गारिकी मन परमेश्वरी आनंदनिलयं सभ्युలందరికీ మన పెద్ద బాబమ్మ నా పేరు అదే కన్నమ్మ పున్నమ్మ రామస్వామి ఇంకా ఉసిరి ఇంకా ముసలియా కుటుంబందరికీ ఇంకా ఉసిరి బంధువులకి ఇంకా నా తరఫున ఇంకా మోట తెలుగు మహాసభ పేరు తరఫున అందరూ సుస్వాగతం ఇక్కడ వచ్చారు మన అమ్మ ఆశీర్వాదం ఇంచుమించుగా నాకు ఇస్తాము. En fait, pour tout respect pour Swami Garu, en même temps pour tout le monde parmi présent aujourd'hui, où il y a un bonheur extraordinaire pour assister à une santé. Vous pouvez saluer un sacrifice énorme qui est une grande monde il fait. Avant de venir là, quand tu fais prendre sa fleur là, ta parole est dans la bouche. Tu peux célébrer une santé. La personne même m'a dit une chose. Pas arriver tous les jours, pas arriver dans toute famille, même ne pas connaître. Tu es une grande richesse toujours Dieu nous. Entre la naissance et la mort, on a l'existence.
nous tous, nous pouvons, comment dire, une façon de dire en anglais, craving for joy. Nous tous pouvons ça, la joie éternelle, ça, la joie perpétuelle. Nous tous pouvons ça. Nous pouvons un bonheur éternel. Mais nous allons essayer de nous faire bien attention. Donc, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Donc, y a-t-il une corrélation entre ce que nous cherchons et ce que le monde peut nous offrir? Nous ne trouvons pas de réponse à ces questions. L'homme plonge dans les expériences de sa vie à la recherche de plaisir éphémère. Éphémère veut dire temporaire. En fait, c'est que nous tout le peut faire. Il faut faire ça, bonheur éternel. Et ça, dans le sens là, quand nous faisons ce qu'on regarde tout, ça c'est le domaine. Mais il faut que nous soyons dans cette direction-là. Si mon fils dit aujourd'hui, nous avons la chance et la bonheur, j'ai apporté à dire tout le monde aujourd'hui, je suis pour nous barrement, et nous disons, merci infiniment, puis de nous la chance pour capable acheter le comme ça. Et crois-moi, nous avons beaucoup la chance de l'assise là, en tout confort, mais il n'y a pas de confort. La place de la paille, le difficile, le moment le plus difficile qu'il est capable de traverser, soigner la famille, éduquer la famille, et en même temps donner un coup de main pour le pays, pour que le pays vienne sécurité, et de nous sanskriti, nous samskaram, c'est que les autres viennent protéger, qui aujourd'hui vivent hérité. Alors, pour parlons, encore une fois, nous remercions infiniment la famille Moustaya et aussi Ousseri pour l'occasion qui de nous pour capable de faire ça sur là, et en même temps remercier aussi Arfement. Et je regarde toute l'équipe ici qui est organisée. On ne peut pas venir, mais il y a pas si ça là. C'est ça. Hein? Alors, si nous avons envie de nous avons ensemble qui approcher, entre guillemets. Il y a entre guillemets qui fait parce que c'est pas pour nous, mais en même temps, nous, en tant que Mauricien, nous devons célébrer. Faites bien attention, n'a pas aventure. Nous faisons où là? Vous devez réclamer ce qui veut dire. Le tout peut s'abonner éternel là. Mais pas trop d'avoir plaisir éphémère. Même nous, les éphémères, malgré nous, on les oublie dans le magasin. Nous, les cours éphémères. Il ne faut pas connaître demain pour bizarre. Il faut bizarre quitter ça, le monde. Alors, faites bien attention. Alors, si vous permettez de dire où ça se traduit grand, où tellement est grand, si vous suivez à la lettre, vous essayez de plonger dedans, vous pouvez le connaître. Une fois que vous commencez à prendre, vous pouvez le connaître qui vous parlez. Et en anglais, j'ai dit, once you start learning, you will know what you don't. Voilà, avec ces trois mots-là, encore une fois, nous disons, ça va dire, madame, et pour ça, grand occasion là, mais tout vous remercie, et au nom du mot cité de Rwanda, vous remercie infiniment pour votre présence et pour votre participation. Encore une fois, pour nous dire, je suis aussi, dernière madame, et dans mon côté, aussi, de côté, mon secrétaire. Dernière madame. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 పెద్దలకు నా నమస్కారములు, పిన్నలకు నా ఆశీస్సులు. చాలా సంతోషంగా ఉంది మనమందరము ఇక్కడ వచ్చి శ్రీమతి కన్నమ్మ పొన్నమ్మ రామస్వామి ఊశ్రీ అమ్మగారి యొక్క పుట్టిన దినం జరుపుకోవడానికి వచ్చి ఉన్నాము. మొట్టమొదట అమ్మ కన్నమ్మ వింటున్నారా అమ్మ? పుట్టిన దినం శుభాకాంక్షలు. శుభం శుభం శుభం.
C'est un grand contentement aujourd'hui. Nous tous ensemble, nous venons, nous les cœurs remplis avec prema, snehamu, l'amour. L'amour pour sa Amma Garu qui appelle Kannamma, Shri Krishna Laman, Kannaya. Kannamma, Shri Krishna Mama même. Et nous tous venus, nous pouvons prier sa Amma Garu, Kannamma, pour Amma Garu. Nous vivons encore en nous, en bonne santé, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vraiment, pareil comme la Tchaya Garu fait prononcer, nous avons un grand bonheur. Si elle tous à la famille, que ça homme là est resté, et vivre ensemble en haut, pour joindre une personne centenaire. Et puis, elle est devenue bien rare, beaucoup rare. Et parmi les rares personnes centenaires, ça homme là peut rester dans la case ensemble en haut. C'est un grand bonheur, ça. C'est un grand ashirvadam. C'est une grande bénédiction. Mon talent parole quelque part, il dit old is gold. Nous ne pas dire this old is gold. Il pas this l'eau, il pas this perle, il pas this diamant. Il y a encore beaucoup fois plus que ça. Je peux imaginer un petit coup quand sa maman là qui fait naître, qui appelle lui chichou. Vous le technique. Chichou. Chichou veut dire un petit bébé. Fait naître. Ça me fait naître. Doucement, il commence à se quatre pattes, ramper, se quatre pattes, tout ça là. Après, il grandit et il devient grand, il devient jeune, il est marié, il a autant d'enfants, autant de petits-enfants. Et là, il montait, il allait. Par exemple, dans nous, Ayurvédique, nous livres sacrés Véd, ça. Son nom même Ayurvédique, pour le Ayu, longévité, l'âge. Un enfant fait naître les chichous, petit bébé. Après, doucement, prend un an pour aller jusqu'à 14 ans, appelle-lui Balak, Balulu, Balakulu, appelle-lui Balika. À partir de 15 ans pour 18 ans, appelle-lui Kumar. À ce moment, vieux bonhomme aussi appelle Kumar. Kumar veut dire 15 ans à 18-19 ans pour faire. Appelle-lui Kumar. Après, laisse-nous dire, nous dire, prend 18 ans pour aller 24 ans. Il entre l'enfance et Zénès. Zénès, il commençait à partir de 25 ans. 25 pour aller 74 ans. Vous écoutez-moi bien là? Vrai Zénès, il commence à partir de 25 pour 74 ans. 75 ans à 100 bananes, légèrement un vieillesse. Prend 100 N, à monter, aller, ça s'appelle Jaravastha. Jaravastha, vraie vieillesse. 100 N à monter. Sa maman là, encore jeune là. D'après nos livres sacrés. C'est là 100. À partir de l'année prochaine, à ce qu'il faut prendre dans une vraie vieillesse. On peut penser un petit peu au Ramayana. Les rois d'Ashrat, on connaît Shri Rama, on ne va pas. Non, les rois d'Ashrat.
tous les matins, quand il finit de prendre son bain, il vient devant son miroir, sur la glace, et avant qu'il y aille dans son parlement, alors là, il coupe un sur CV, il me dit donc correct. Un jour, il était un peu guetté dans la glace, et il sautait. Il trouve un CV qui commence en couleur, à cette épine blanc. Il est tard. Bon, mais il vient à cette. Les là, on connaît qu'il a d'après la moyenne, 80 ans. Il y en a 80 bananes, à cette un CV qui commence blanc, qui commence blanc, qui prend une petite couleur. J'ai dit, ça problème-là, mon père vient vieux, mais mon père dans les enfants. À cette il peut penser, mon père dans les enfants, à ce qu'il faut faire. Mon père voulait dire, longtemps, dis-moi, tu peux vivre beaucoup de bananes. D'après nous, il y a du Ved. Mon père encore pensait qu'il chapitre ça, chapitre 30, 31, 32, 35, dans les environs. Il y a du Ved, vous connaissez, Rig Ved, Yajurved, Samaved, Atharvaved, 4 Ved nous avons. Dans Yajurved, son nom Yajurved, Yaj, c'est Yaj, Karma. Alors là-dedans, bon Dieu peut dire, oh Dimoun, Jive ma Sharada Shatam, tu as besoin de vivre sans bananes et tu as sans printemps. Minimum. Si tu peux vivre comme ça, faire ça, toilette, tu vivre 500 bananes, tu vivre 1000 bananes. 1000 bananes. Si vraiment nous pouvons vivre, d'après Ayurvédique, ben, définitivement nous vivons sans bananes, là, ça non, il dit tout ça. Nous allons t'attendre, maman, longtemps. Tu peux dépasser 100 bananes, tu peux aller. Maman, t'attends 92 bananes, jamais il n'y a pas de figure docteur. L'hôpital, ce poulet, il ne va pas connaître. Figure docteur, il ne va pas connaître. Mot tata. Mon maman, son papa. Imagine un petit coup, qui quand tu manges, tu peux manger. Comment tu peux vivre? Tu peux vivre. Alors, mon père voulait dire, pour nous vivre en bonne santé, et nous dépassons bananes, nous devons connaître qui nous peut manger, qui l'air nous peut manger, comment nous peut manger. Sommeil, nourriture, des affaires bien importantes. Ça même qui a ayurvédique qui nous dit. Alors, vraiment, il y a un grand contentement aujourd'hui. Amma, Kanamma, Onamma, Ramasamy Usri Amma Daru peut célébrer son Janmadinam, surtout son 100e Janmadinam. Ça fait nous bien contents et nous prier pour ça Amma-là, Mahavishnu, Narayana, Shri Krishna, Tuban Devi Devta, bénis-les, donne-lui bonne santé et il continue à vivre encore avec nous, encore avec nous, jusqu'à bon Dieu même voulait, mais nous continuons, nous comptons, il continue à vivre en nous. Et un grand bravo pour la famille Moussalaya et la famille Ousri. Ils ont gagné une bonne pensée pour célébrer un Janmadinam pour un centenaire dans sa façon-là. Mais on connaît tous les deux familles de bien, je suis capable d'aller dans 5-star Hotel, l'hôtel 5 étoiles, longue la table, et beaucoup d'affaires que tu es capable de faire, mais on ne pense pas tout ça là, et ce qui m'en apprend, en malamène vient nous à l'ashram. Ça qui est joli. Ce qui m'en apprend, ça en malade, fais-moi la prière dans l'ashram. Alors, ça même qui appelle samskaram. Samskaram. Il gagne sa bonne formation là. Et tous les deux côtés famille, me connaissent tous les deux.
la famille Mouslaya, nous disons Mouslaya, et la famille Ousri. Vous êtes bien cultivés, bien adorables, et vous êtes aussi bien organisé. Un grand bravo, une grande félicitation. Voilà, en terminant, moi pour dire plutôt une invitation exact dimanche prochain. Nous pouvons organiser, Ashram ici peut organiser, comme chaque année, Shri Satyanarayana Swami Puja Pratham, dimanche prochain, le 20 décembre, à partir de midi et demi, par laquelle vous venez. Et puis, ce dimanche, ensuite, le 27, comment on trouve Shri Krishna, il finit devant nous, Srimad Bhagavad Gita Jayanti. L'anniversaire Bhagavad Gita, un livre sacré pour nous, l'essence, les Védas, les Upanishads, l'essence Upanishad, les Bhagavad Gita. L'anniversaire Bhagavad Gita, 5120 bananes depuis Sri Krishna, Ubindo Savakela et Dinale. Donc, par rapport dimanche prochain, à partir de midi et demi, le 20 décembre, Shri Satyanarayana Swami Puja, et puis le 27 décembre, nous, Bhagavad Gita Jayanti, nous pouvons faire Mahayaj, à partir de 8h du matin. Par rapport. Voilà. Dhanyavadam, Abhinandanam, Om Shanti, Shanti, Shanti.